Hello everyone, welcome back to this course. We are over here doing quantitative methods at Econity. This is a semester 7 course, but right now we haven't started with the course content actually, and we are doing straighten your stats, get your stats straight before you get into that. So all the basics need to be clear. This is the third lecture of that series, of that revision series that we are having, and we are going to continue our discussion from where we left off. All right, so let's do that. All right. So in the last lecture, the last thing that we did was probability distributions, and we did a lot of named probability distributions. So we are going to pick up from there. I said that we have covered all the important ones so far, but we have left the most important one for the next lecture because it requires more time, more understanding, right? So just let's just be clear कि एक probability distribution क्या है. As I explained, वो probability का distribution है, जो probability mass है, जो sand है हमारे पास 1 kg, उसको हम बांट रहे थे. We were just distributing it along the support of any random variable of any RV. ठीक है, so जिस तरफ ज़्यादा probability, वो उधर को ज़्यादा pile up करता है. And then the functional form that we have, that is simply going to give you that you put the value of small x over there, right? Or that function will essentially throw out a value between 0 and 1, which for say a discrete case, it will just be the probability of the random variable actually taking that value. ठीक है ना. तो जैसे हमारा जो बाइनोमियल था, तो बाइनोमियल में क्या था, सपोज अगर तुम्हारा n 10 है, then you have 10 Bernoulli trials and the probability of success is, for example, half. Then the probability that x, which is the Bernoulli random variable, takes a value equal to say 4, is given by its probability distribution, which will say that what is the probability that the number of successes in these 10 Bernoulli trials will be 4. ठीक है ना. तो वो जो भी फंक्शन है उसमें वो वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन वो प्रोबेबिलिटी जनरेट कर देगा, है ना. And then we said that every probability distribution is like a family, and every individual member is identified by its parameters. You can have one parameter or you can have multiple parameters. And finally, we discussed in case of continuous random variables, we said that because we want to allow for every point, every possible point on this real line, right, to be in the support of the RV, है ना. Support याद है, जो possible values RV can take. So if we want that RV can take any possible value, so obviously in the limit, the probability of any one value occurring will be 0. तो हम continuous variable के लिए we look at an interval and see that what is the probability that the particular random variable will take a value that lies in this interval. ठीक, वहां से अब हम उठाते हैं. हमने बहुत सारे किस्म के random variables discuss किए, and the idea is that if you define a random variable like that, it will have this particular distribution. तो ये किसी का invention नहीं है. As I said, these are discoveries. People discovered that if you count the number of failures till your first success, you will have a certain kind of probability distribution, which will always have this look and feel. उसमें तुम अपना स्पेसिफिक पैरामीटर डालोगे तो एक पर्टिकुलर उसका अवतार आ जाएगा. If you want to count the say wait time before something happens, again another kind of distribution. If you want to count the number of successes, however you define, if you assign each variable, each possible value an equal probability, which is a uniform distribution, तो एक अलग किस्म का functional form निकल के आएगा. ठीक है ना. Now we will do the normal distribution. इसका नाम normal जो है वो ऐसे ही नहीं पड़ा है. इसका नाम normal इसीलिए है क्योंकि ये normal का symbol है. This is how things normally behave, right? So what you will see is that, look, let's look over here. So many numerical populations have distributions that can fit very closely by an appropriate normal curve. तो ये जो normal curve होता है हमारा, बहुत सारे random variables का distribution naturally वैसा ही होता है. For example, heights, weights, right? Other physical characteristics. Generally, for any population, what you will find is कि
ऑफ कोर्स लोगों की हाइट अलग अलग होती है, सो सपोज यू डिफाइन अ पॉपुलेशन एज आई डोंट नो अगेन, जो डीयू के बच्चे हैं, है ना, सो सपोज डीयू के बच्चों की पॉपुलेशन डिफाइन करो एंड यू चूज टू लुक एट ओनली दी फीमेल स्टूडेंट्स इन डीयू। सो ये जो डीयू के गर्ल्स की हाइट है, everyone will have a different height, right? Suppose the smallest person is, I don't know, 4 feet, and the tallest girl is suppose 6 feet. ठीक है ना? So suppose ये हो गया 4 feet, and this is your other extreme of 6 feet. All possible values that lie between 4 and 6 is a possible height. कोई कोई मतलब क्या बोलते हैं, इंटीरियर में तो हाइट लेके नहीं पैदा होता है ना, हर किसी का कुछ भी पॉसिबल हाइट हो सकता है। सो ये एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इफ यू लुक एट अ लार्ज एनफ नंबर ऑफ पीपल, large that depends, that changes with context, but to look at all the girls in DU is a very large population, ठीक। so इस population में it has been observed that the probability, पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेसिकली, कि ये तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है, योर आरवी इज योर हाइट, जिसका सपोर्ट लाइज बिटवीन 4 feet and 6 feet, एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the RV or the girls will have height of any given measurement between 4 and 6 feet. So ये देखा गया है कि अक्सर ये सब चीजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा दिखता है ना, इतना शार्प एज नहीं होता है उसका, समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है विच इज टेलिंग यू कि जो मिडिल में ये वाली जो वैल्यूज हैं जो एवरेज के अराउंड है उनका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लुक हाउ मच सैंड यू हैव हियर इन द मिडिल, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है, एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस मिडिल द प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस स्लोली, राइट। सो यू विल हैव मोर वैल्यूज जो मीन के करीब हैं, जो सेंटर में है, एवरेज के तरफ सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, और जैसे जैसे तुम एवरेज से दूर होते जाओगे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, राइट। सो दिस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देखो मास कम है ना, सैंड कम है, यहाँ पे सैंड कम है, और जैसे जैसे और दूर चले गए सैंड बिल्कुल ही थिन हो गया। ऑल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक, यूजुअली ये मीन के अराउंड जो है वो सिमेट्रिक होगा, मतलब मीन और मीडियन कोइंसाइड करेंगे, मतलब जितने लोगों की हाइट सपोज एवरेज इज आई डोंट नो सपोज 5, सपोज 5 feet एवरेज है, जितने लोग 4 से 5 के बीच में लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ पीपल lie between 5 to 6 feet, right? So I'm not taking the midpoint. If you want to choose any other point, maybe choose 5 feet 1 inch, right? So that's not the midpoint. I'm not saying that the midpoint divides this population into two. I'm saying the mean divides the population into two, and the mean can be anything, right? Usually it will be around इन दोनों के कहीं बीच में ही होगा. But the point is that height हो गई, weight हो गया, हाँ? Suppose any other physical characteristic you can think of as I don't know what else, height, weight, some other body measurement, right? Suppose I don't know, skin color is not a good example. Mm, और कुछ देखते हैं। सो सपोज दिस इज तो फिजिकल मेजरमेंट, कई बार अगर इसका एक फंक्शन भी हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग एट अंडर वेट चिल्ड्रन, हाँ, तो तुमने अंडर वेट को एक तरीके से डिफाइन किया है विच इज सेइंग दैट इफ यू आर दिस मच अवे फ्रॉम द एवरेज वेट देन यू आर अंडर वेट, राइट, दिस मच बिलो द एवरेज वेट देन यू आर अंडर वेट। तो ये अंडर वेटेडनेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन यू विल फाइंड दैट इट हैज दिस नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, जो मीन होगा उसके अराउंड होंगे सब लोग, और बाकी जगह टेपर करता जाएगा और एक सिमेट्रिक तरीके से लेस और मोर की तरफ इट विल टेपर,
This is what occurs naturally. What other things occur naturally? So in one of the famous books, there's this article which discuss many examples of this sort, and other examples are measurement errors in scientific experiments. Think about it, measurement error. जो सपोज तुम कोई चीज मेजर कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है. Not all measurements are correct, depends on how precise your instrument is or how controlled your situation, your environment is. So hamesha you will find a measurement error. It will be more pronounced in cases where you're dealing with human subjects. So you ask someone ke for example अगर tax data collect कर रहे हो या wealth data collect कर रहे हो, usually you will have measurement error, है ना. Expenditure data, suppose it's a recall data and people are recalling कि उन्होंने कितना spend किया last 1 week में. A lot of surveys do that. So इस last 1 week में कितना spend किया, अब ये memory based exercise है, कोई अपने खाते में लिख तो रहा नहीं है ना. तो अब उसमें measurement error होगा. बट ये जो measurement error होगा ना, ये भी normally distributed होगा. If suppose usually an example could be that the measurement error is distributed normally around 0, विच मीन्स कि ज्यादातर लोगों का जो है यहाँ पे होगा 0 के अराउंड, कभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं हो रही होंगी. राइट. सो एज यू मूव अवे फ्रॉम द मीन यू विल सी लाइक कोई इतना भी मतलब या तो झूठी बोल रहा है. राइट. But if people are actually reporting, you will see errors, but this variance around the mean will not be very high. As you go away from the mean, the probability of people actually making that error will be lesser and lesser and lesser. Similarly, anthropometric measures on fossils, right? So fossils के ऊपर तुमने कोई measurement लिया, right? So suppose carbon dating हो गया या और भी कोई जो भी ये लोग these people do, not very familiar with that. So then that also shows this. So it's not like this is something that humans have. This is something that is naturally occurring in nature. तो fossil तुम observe कर रहे हो, which means you're observing say thousands of years, sometimes millions of years in history. Still you will observe this kind of a pattern. Then reaction times in psychological experiments. Psychological experiments कई बार क्या होता है कि you're given a stimuli and then there's some reaction that you give and then that is recorded. So किस type के stimuli होते हैं? This is I read this very interesting experiment where it was seen that if you observe something, how do your eyes respond? So that means they were measuring very detailed measurements. They were measuring the dilation or the contraction of your pupil. आंखों में जो pupil होता है, the entry where from where the light enters your eyes and images are formed. It's said that when you are happy or when you are receptive or when you are in love, when you feel love, when your oxytocin is released, the pupil expands. And when you have negative emotions, the pupil contract होता है. So they were measuring that. And इसमें भी they observed that it is normally distributed. Suppose either they were measuring the pupil expansion or they were measuring के कितना रिएक्शन होता है. So suppose कुछ अच्छी अच्छी बातें दिखाई उन्होंने स्क्रीन पे, कुछ स्टिमुलाई दिया and people's pupils expanded. But ये जो एक्सपेंशन है किसी का सपोज 2 यूनिट होगा, किसी का 5 यूनिट होगा, फिर से इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही हो. जो मीन होगा उसके अराउंड ही सब कुछ चल रहा होगा एंड बहुत ज्यादा डायलेशन या बहुत कम डायलेशन का प्रोबेबिलिटी घटते जाए. This is very different from the kind of thing that is suppose uniform distribution. Uniform distribution says that हर interval का probability same है. But this is not saying that. Concentrated towards the mean, thinner and thinner on the tails. Okay. What else? Measurements of intelligence and aptitude. ये भी इनका भी normal distribution होता है. Scores on various tests, right? Numerous economic measures and indicators. So all these things that are naturally occurring. किसी ने किसी को बोला नहीं कि तुम क्या report करो, कैसे react करो. This is how things behave on earth.
हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऐसा ही बिहेवियर है, इनफैक्ट यूनिवर्स में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस का ऐसा बिहेवियर। ठीक, so then again, apart from this is the second point that I'll come to. So you will see that individual variables, ये सारे variables हैं associated with humans, associated with animals, associated with fossils, right? Associated, with whichever way you want to design the experiment. Individually, उनका normal distribution. कई बार, this is the most important point for statistics, right? And for inference that we will do. Even when, sorry, excuse me, even when individual variables themselves are not normally distributed. So for example, you look at a Bernoulli, you look at a binomial, you look at a uniform. अब ये लोग तो इंडिविजुअल, सपोज डाइस टॉस किया तुमने एंड लुकिंग एट के कौन सा नंबर आता है, योर रैंडम वेरिएबल इक्वल्स द नंबर ऑन द डाई, दिस हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी दिस हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन तो ये इंडिविजुअली ये मतलब खुद से दिस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट sums and averages of the variables will, under suitable conditions, usually are very weak, have approximately a normal distribution. Okay, so this is something that we will come back to. This is the central limit theorem, and I will explain to it more when we actually do it in the chapter. Okay? All right. So now let us having, discuss the importance and the prevalence of, so normal distribution ka importance is not something that is assigned by humans. It is something that is naturally occurring. है ना? तो वो एक बार डिस्कस कर लिया तो उसका हम फंक्शनल फॉर्म भी देख लेते हैं. So a continuous random variable x is said to have a normal distribution. Parameters are given by mu and sigma, or kai baar it's mu and sigma square, right? So the parameters are the mean and the standard deviation that differentiates one normal from the other. Okay, and your mu, so basically what this means is that the random variable ka jo support hai, the possible values that it can take, is the entire real line. Minus infinity to plus infinity. So ये पूरा real line possible values हैं. All right, and of course your mean can lie anywhere on that, and you have a positive standard deviation. This is what this is saying. Then if the PDF is given like this, so this PDF is saying के तुम मेरे को मतलब if you want to know, ये PDF को जब plot करोगे, right, what you have is this is your X value and this is your, PDF value. Suppose ये तुम्हारा Y है जिसके axis पे you're plotting the PDF. So this function f as a function of x, ये लिखा है ना, given these parameters will look like this, और ये जो function है इसका functional form ये है. So इसमें what will you do when you put different values of x's? Look over here. This is your x. है ना? So जब तुम मान लो कि you've given two values of x's, because this is a continuous distribution, so we have to look at the interval. So suppose your CDF will basically you will have to integrate. तो जब तुम x का कोई particular वो लेते हो, range लेते हो, and you integrate this function f of x, x1, x2, this will give you the area or the probability with which this normal random variable will lie in that interval. ठीक है? So that basically इसका जो functional form है ये अतरंगी सा, ये इसका functional form. तो इसको याद कर लेना होता है. इसमें जो ये वाला term है, this is basically added to it so that this integrates to 1. क्योंकि हमारा जो probability distribution है, जो CDF है, that should integrate to, sorry, the PDF should integrate to 1. So इसको, this is just called the constant, which makes
sure that this thing integrates to 1, right? Okay, so what we have is दो normal distribution में फर्क कैसे होगा? Look at this, right? So these are how all these are normal distributions, क्योंकि सब में ऐसा bell shape है, but इनको differentiate क्या कर रहा है? Think about it. This and this, इनका mean अलग है, वेरिएंस भी अलग है. सो यू कैन हैव थिंग्स लाइक कि सपोज मीन इतना ही है और वेरिएंस अलग है, कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा. तो मीन इज द सेम बट वेरिएंस इज डिफरेंट, और वेरिएंस इज द सेम बट मीन इज डिफरेंट, और मीन एंड वेरिएंस बोथ आर डिफरेंट. सो ये सारे के सारे बेल कर्व्स हैं, बट व्हाट डिफरेंशिएट्स वन फ्रॉम द अदर इज where they are centered and how much are they cluttered or not cluttered around the mean. So this is what gives a particular normal distribution its own individuality. Cool? All right. And we know that larger standard deviation would essentially mean more spread. तो वो उसको बोलते हैं कि the tails, these are called the tails. All right? जो क्या बोलते हैं, द मतलब टेल इज टेल, एक्सट्रीमिटीज. सो एक्सट्रीम जो एंड्स हैं उनको बोलते हैं टेल्स, और टेल्स पे जितना सैंड हो वो उसका थिकनेस होता है. सो यूजुअली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव थिन टेल्स. मतलब जैसे जैसे तुम इतना दूर चले गए यहाँ पे सैंड एकदम ही कम हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, इट विल बी पॉसिबल बट द प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी वेरी स्मॉल. This is thin tails. And if you have another normal distribution that looks like this, right? This is a thicker tail, more sand on the extremes. So this is some terminology that is usually used. All right. Then let's get to the special among the special. So if the normal is VIP, तो ये भी VIP है, ठीक है ना? Standard normal. And standard normal is special not because it is naturally occurring, but because this is where humans have entered. और यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक particular kind of normal distribution को single out किया है, so that we are able to compare any two normal distributions. Let's understand this. Standard normal का क्या function है? पहले तो standard normal क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल है दैट पर्टिकुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी फैमिली है उसका स्पेशल मेंबर है. और वो स्पेशल मेंबर कौन है? द वन विच हैज मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है तो वेरिएंस भी 1 होगा. मीन 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू 1, राइट? सो ये इसको बोलते हैं द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड whatever variable has this distribution, it's called a standard normal random variable, and it is denoted by Z. ये इतना special है, इसका अपना नाम है. In fact, normal distribution का अपना PDF का symbol भी है, right? So it is denoted like this, phi, the Greek letter. तो हम जो f of x इसमें लिखा हुआ है, Devor has not used phi, but you will see that a lot of times f of x के लिए P use करते हैं, and for the cumulative one you use the capital letter. This is the denote or the symbol that is used for normal distribution PDF and CDF. और जो standard normal है, normal distribution को हम ऐसे भी बोलते हैं that suppose x is distributed normally with yeah, so x is 1 second. So we say that if any random variable has the normal distribution, we say that x is distributed normally with, suppose, mean 5 and variation 2. Yeah, this is how the symbol that we use. And for a standard normal, we specifically use जो उसका RV है उसको Z से denote करते हैं, ठीक है? So the PDF of Z is given by this,
where this is your mean, this is your variance or standard deviation. Okay? Now, why, first of all, why standard normal? ठीक है? स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या करता है ना, हमने पहले कहा कि भाई बहुत किस्म के नॉर्मल हो सकते हैं, उनमें से एक है ये स्पेशल वाला, right? This has mean 0 and its variance is 1. First of all, why do we need something like this? Is because things are clean, है ना? 0 के अराउंड है और वेरियंस इसका 1 है, ठीक? यहाँ पे क्लीन है चीजें. पहले हम क्या करते हैं, let us discuss the properties of the standard normal distribution and then we will see that why we use it. It is basically a unit of measurement या कि एक standardization के लिए use किया जाता है so that two different normal distributions can be compared. So first of all, let's understand कि इसकी properties क्या हैं. Yeah, see, this is your CDF, है ना? Whatever is the value of Z, उससे कम, what is the probability that your random variable takes a value lower than Z? Is equal to this of Z is equal to the probability that Z takes a value less than small z, right? And it is this shaded area. All right. Then let us discuss the properties. First of all, because all other normal variables भी technically they are symmetrical, but जरूरी नहीं है. कई बार हम skewed normal भी देखते हैं, है ना? ऐसा भी normal distribution होता है और ऐसा भी होता है. तो but खैर इसमें घुसने की जरूरत नहीं है. Usually we will say that the normal distribution is symmetric and similarly your standard normal is also symmetric, right? Then the second thing that we will do is percentile properties. So percentile properties क्या है इसकी, ये देखते हैं. Where have they given it? Yeah, over here. So what this property says is, what this property says कि कोई भी अगर standard normal distribution होगा ना, so the percentile properties say that for a standard normal distribution, this is called, have they given it over here? Yeah, all right. So let me state it in an alternative way. This is called the 68, 97, sorry, 68, 95, 99.7% rule. What this says is that the probability, and this is actually, we will show that this can hold for any normal, but यहाँ पे ये होगा कि the probability that is 0.68. Let me just write it. The probability that what does this mean? पहली बात तो अगर हमने कहा कि Z ऐसा है, which means it is spread around 0, that means आधे time 50% probability it will take negative values, other 50% probability it will take positive values. Yeah, so Z can take positive and negative values. Now when we say that the probability that Z is less than 1, which means this essentially translates to probability that Z lies between 1 and -1, है ना? यही मतलब है इसका. Mod of Z lies mod of Z is less than 1, मतलब कि Z absolute values और sorry actual values में -1 और 1 के बीच में lie करे, which means suppose here -1 and +1. All right. This says that the probability that this standard normal random variable will take a value between -1 and +1 is 68%. ये area 0.68 है. And this is what? If your mean is 0 and your standard deviation is 1,
This is essentially saying that the probability that your random variable will lie within one standard deviation. One standard deviation कितना है? One ना? Will lie between one standard deviation around the mean is 68%. Probability, let me just write over here. This particular thing is saying that the probability that standard normal variable lies within one standard deviation around the mean. This is always 68%. And you can calculate this. इसका proof वगैरह हम नहीं करेंगे, but ये point है. Within one standard deviation. अगर तो कोई वेरिएबल रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो 68% of the values will lie within -1 and 1. Probability that z will take a value within two standard deviations, मतलब इस केस में -2 and +2, 95% of the value will lie here. सारे के सारे मीन के करीब, मीन से ज्यादा दूर जाएंगे ही नहीं. सिर्फ 5% वैल्यूज इस बाउंड्री के बाहर होंगी. ये जो पूरी बाउंड्री है -2 से 2, that is 95%. Only 5% of the values. There's only a 5% probability that a random variable which has the standard normal distribution will, get a value, will actually realize a value that is two standard deviations away from the mean. That is less than -2 or greater than +2. And once you go to 3 standard deviations, -3 and +3, (99.5% values. सिर्फ 0.5% values will be as extreme as greater than 3 and less than -3. This is a pretty strong property. Okay, अगर किसी चीज का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 68% चांस है कि सारे के सारे वैल्यूज एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर ही आ जाएंगे. 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक का तुम देखना चाहते हो तो 95% वैल्यूज. एंड बाय द टाइम यू गेट टू 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, -3 and 3, यू विल हैव प्रैक्टिकली कवर्ड ऑल पॉसिबिलिटी. उससे ज्यादा एक्सट्रीम चीजें होंगी नहीं, सिर्फ 0.5% probability से, which means the area is 0.05. This is the percentile property of the standard normal distribution. All right. Okay. So now that we have understood कि standard normal कितना बढ़िया है, कितना standard है, अब देखते हैं कि हमने standard normal को क्यों invoke किया है, क्यों हमने ये special item को चुना है. उसका रीजन ये है कि you can standardize any एरा गैरा रैंडम एंड एरा गैरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी मेंबर को उठा के तुम ये स्पेशल में कन्वर्ट कर सकते हो. मान लो कि दिस इज सम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन है 2 एंड वेरिएंस है सपोज म्यू इज 2 एंड सिग्मा इज आल्सो 2, राइट. व्हाट यू कैन डू इज you can standardize it and convert it to a standard normal distribution which will have mean equal to 0 and variance equal to 1. So variance actually come ho jayega. So it will look like this. Something like this. All right. Not very good diagram, but point ये है. अब देखो कैसे करेंगे इसको. If x has a normal distribution with any mean, any standard deviation, then you can define a z variable which is a function of this.
इस x में से अगर तुमने उसका मीन माइनस कर दिया, फेमिलियर लग रही है ये चीजें? अगर x में से फॉर एवरी वैल्यू दैट x टेक्स, सपोज x कैन टेक वैल्यू बिटवीन ये वाला जो तुम्हारा x था रेड वाला, इसका वैल्यू सपोज, क्योंकि मीन दो की तरफ है तो ऑब्वियसली द वैल्यूज दैट इट कैन टेक इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट द सेंटर इज अराउंड 2. नाउ हर वैल्यू जो ये लेता है, मान लो इसका वैल्यू अगर 3 है, सो देन यू डिफाइन अ z which will equal to what? Whenever x takes a value 3, z will be equal to 3 minus mu, which is equal to 2 upon 2. So 1 by 2. If z takes a value 4, you get 1. Sorry, if x takes a value 4, z takes a value 1. Similarly, if x takes a value, say 0, है ना, so your z takes a value of minus 1. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो तुमने z को एज अ फंक्शन ऑफ x डिफाइन कर दिया है, राइट? सो ये z इज ए फंक्शन ऑफ x. x अपना चल रहा था, x अपना कुछ कुछ वैल्यूज ले रहा था, बट जैसे ही x ने कोई वैल्यू लिया, तुमने उसके ऊपर एक z डिफाइन कर दिया कि जब x की ये वैल्यू, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आई विल create a z variable wherein I will subtract the mean and divide this difference by the standard deviation. And when you do this, you can prove कि ये जो इधर z डिफाइन हुआ है इसका exactly standard normal distribution होगा, right? What this says is if x has a normal distribution, some mean, some standard deviation, and you define another RV, which is a function of this random variable, this will have a standard normal distribution and it will have all the properties of the standard normal distribution. ठीक है ना? So the key idea of the proposition is that by standardizing, इसको you subtract the mean, divide by the standard deviation, इसको बोलते हैं standardization, right? If you do this, then by standardizing, any probability involving x can be expressed as a probability involving the standard normal RV, है ना? x का वैल्यू अगर 2 है और 2 से 3 के बीच में लाई करने का उसका कुछ प्रोबेबिलिटी है, तुमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, और वो सेम प्रोबेबिलिटी नाउ यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द z डिस्ट्रीब्यूशन. और z डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तुम्हें काफी पता है. तो तुम्हें कोई भी रैंडम नॉर्मल दिया हो, उसको तुम स्टैंडर्डाइज करो. दो चीजें कर सकते हो. पहले चीज उसको स्टैंडर्डाइज करोगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तुम्हें जो भी जानना है, इमीडिएटली यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द z डिस्ट्रीब्यूशन. एक बार मिल गया, वापस कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्मूले में वापस डाल दो, z के तुम्हें वैल्यूज मिल गए हैं, x इस फॉर्मूले में वापस डाल दो, x के वैल्यूज मिल जाएंगे, राइट? द सेकंड थिंग यू कैन डू इज, सपोज यू हैव x and y टू डिस्ट्रीब्यूशंस, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, और इन्हें तुम्हें कुछ इसी तरीके से कंपेयर करना है. अब अलग अलग तो कंपेयर नहीं कर सकते, तुम दोनों को स्टैंडर्डाइज कर दो z के चक्कर में, z में, एंड देन यू कंपेयर, right? Suppose you want to compare, marks in maths and marks in English. अब ये दोनों standard distribution हो सकते हैं इनके, right? Suppose maths and marks and maths and English are two random variables that individually have a standard normal distribution. Suppose maths के जो marks हैं उनका average higher है, right? So suppose marks can lie between 0 and 100, and इसका mean जो है it lies around 75. This is for maths, है ना? And it looks like this. And then English, because English is a less scoring subject, then again 0 से 100 के बीच में lie कर सकता है, and the average is around 60. And probably English में the variance is also higher, right? So suppose English के marks कुछ ऐसे दिखते हैं. One second. Yeah, so your English scores look like this. Less concentrated around the mean, higher variance. Ab you want to see that, suppose you want to compare students. You want to see कि भाई
बच्चे इंग्लिश में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या मैथ्स में? क्लियरली मैथ्स का एवरेज हायर है, बट मैथ्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है. इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. You don't want to do that because maths anyways एक हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट है. और ये हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है ये कैसे एम्बॉडी हो रहा है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में? हायर स्कोरिंग मतलब एवरेज हायर ही होगा इसका. नेचुरली मैथ्स का एवरेज हायर होगा. इट्स अ हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट. नेचुरली इंग्लिश का दिस इज व्हाट आई सेड, दिस इज 60, राइट? सो नेचुरली इंग्लिश का एवरेज कम होगा. So if a student is getting 60 in English and 75 in math, does it mean that the student is better in math and poor in English? No, because these are different distributions. तो इन्हें कैसे कंपेयर करोगे? दोनों को स्टैंडर्डाइज करो. तो जब इसको स्टैंडर्डाइज करोगे, फॉर दिस योर z will look like, suppose this is score in math and this is score in English. So z of math will look like math minus 75 upon, suppose इसका variance is, I don't know, 15 and इसका variance है 30, है ना? So this is upon 15 and then some other, sorry, this is another standardization where you see that score in English minus the mean upon 30. Then both of them will have the standard normal distribution, right, with mean 0 and variance 1. And then you can compare these two distributions, right? So for suppose दोनों का ऐसा आ गया, अब तुम्हें दिखेगा कि अगर स्टूडेंट का 75 है तो वो उसके भी z के हिसाब से 0 ही है, वो भी मीन है. अगर स्टूडेंट का 60 है तो भी दैट स्टूडेंट इज एवरेज. इसका मतलब स्टूडेंट का कैपेबिलिटी डिफर नहीं कर रहा है इन दोनों में. Suppose the student scores 90 in math and say 70 in English, right? Up to you cannot compare given this distribution, but what you can do is suppose 90 in math comes over here in the Z distribution and 90 in or क्या था 70, right? 70 in English comes over here. तब अगर ऐसा है तब definitely math performance better है क्योंकि Z में उसका वैल्यू ज्यादा आया, है ना? बट अगर ऐसा है कि 90 इन मैथ और सपोज 80 इन मैथ, suppose 80 in math is somewhere here and 70 in English gives a Z value that is here. So 70 in English is actually better than 80 in maths. Students is actually doing better than average in English, even though English का score math score से कम है. इस तरीके से Z को यूज करके हम दो डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर कर सकते हैं. वी कैन ब्रिंग देम ऑन इक्वल फुटिंग. जो भी जब तुमने यहां पर m में 90 डाला, हाँ सपोज क्या कहा था हमने 80 डाला, और यहाँ पे तुमने हाँ यहाँ पे तुमने m इक्वल टू 80 डाला, यहाँ पे तुमने e इक्वल टू 70 डाला, राइट? इफ द वैल्यू दैट यू गेट इज हायर ओवर हियर, then the student is better in English. If the value you get is higher over here, student is better in math. So तुम 80 और 70 को कंपेयर कर पा रहे हो. And it is possible कि depending on the distribution, 70 in English is better than an 80 in math. All right. This is the power of standardization. This is what the standard normal does. और इसीलिए वो इतना celebrated है, इसीलिए VVIP है वो. ठीक है. और एक बारी तुमको ये पता चल गया तो फिर तुम यहाँ से वापस भी जा सकते हो, वहां से यहाँ आ सकते हो, बैक एंड फोर्थ कर सकते हो जब जैसी जरूरत पड़े. ठीक. All right. Okay, so this is your standard normal. Anything else? So then, because of this, something that I will not prove, but हमने क्या कहा था that for a standard normal, the probability that Z lies between -1 and 1 is 68%. इसको when you convert now, what you will find is that the probability, remember this, and now let me write this. Percentiles of any arbitrary normal, I'm writing it over here.
This says that the probability that any normal distribution let's say the probability that any normal distribution, suppose X, lies within one standard deviation, right? So the probability that X minus mu, the way to write it is like this. X minus mu मतलब mu के अराउंड, मीन के अराउंड कितना deviation है, is less than 1 sigma is 0.68 for any normal distribution, not just standard normal. कोई भी normal distribution में 68% of the values will lie within one standard deviation. So if your mu is 2 and your sigma is also 2, then the 68% of the values will lie between 0 and 4. Similarly, the probability that X minus mu will lie within two standard deviations is as usual 0.95. 95% values will lie within -2 and 6. And the probability that values lie within 3 standard deviations is 0.995. Almost all the values will lie within 3 standard deviations, -4 and 8. Cool. So ये हमारा normal का और standard normal का power है. That is why this is one of the reasons. अभी तो हमने we are only scratching the surface. One of the reasons why it is so important. All right. Okay. Then this just says that even discrete distributions, if you increase the number of n over here, so you will see that even the binomial starts following the normal distribution. All right. This is the normal approximation. Then we will use another distribution, the exponential distributions. And exponential distribution का भी जो मतलब क्या नाम है, वो तो same है, the what do you say, the PDF, ठीक है, PDF सेम है, मतलब PDF तो इससे गिवन है, बट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टोरी क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स. ज्योमेट्रिक क्या था? इट वाज काउंटिंग द नंबर ऑफ फेलियर्स till you get the first success. What does exponential do? Exponential counts the waiting time till you are successful. All right. So it counts the waiting time till the arrival of success. तो इसका भी मतलब क्या है? Basically approximation. So this is your waiting time till the arrival of success. So you can think of के बस लेने जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, मतलब बस का तो सपोज दिल्ली में पता नहीं है कि कब बस आएगी कब नहीं आएगी, तो कितना वेट टाइम, दैट फॉलोज द exponential distribution. How much you will have to wait if you want to look at the probability distribution of this variable. कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, ये सारे possible values हैं that it can take. This will follow what is called the exponential distribution, जो कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, and that's the rate of success per unit time. Okay, so this is your chapter number 5. Sorry, chapter number 4. And the other thing that is left is basically the joint distributions from chapter 5. Okay. All this you can ignore, not very important. Let's get to now chapter 5, which is talking about joint distribution, right? All right. So अब joint probability distribution क्या है? अभी तक हम 2D में काम कर रहे थे. हम कैसे काम कर रहे थे? We were saying that this is the values that the random variable can take, है ना? मान लो कि
0 से 10 तक. And the second dimension, we were plotting the probability. So it's easier to visualize things in the discrete kind of space. So this axis, the vertical axis, was giving us what? कि हर वैल्यू की कितनी probability है. मान लो इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है ना. So this is how we were plotting the probability mass function for discrete. और continuous के लिए हमने फिर से this was giving you the function, suppose कुछ ऐसा था, of how the probability is distributed. Now अब we will move from 2D to 3D. उसका क्या मतलब है कि instead of looking at how x or how or with what probabilities x takes a particular value in its support, we will say that with what probability x takes a particular value along with y taking any other value. Jointly क्या possibility है कि वो ये value लेंगे. और jointly हम कैसे देखते हैं? हम 2D में देखते हैं, right? So now what you will have is, let's say that this is the 2D space और ये है तुम्हारा third dimension. All right, this is your x-axis, this is your y-axis, this is your z-axis. अब this is your plane, है ना? ये सोचो कि ये plane है. Think about it. This is the plane, and you put anything on the vertical axis, right? This becomes your z-axis. ये 3D हो गया. अब अगर ये x-axis है और ये वाला ये y-axis है ना? और ये है तुम्हारा z. तो कुछ ऐसा ही डायग्राम मैंने जो है यहाँ पर बनाया है. I hope it gives you that 3D effect, right? So x and y are in the 2D plane, and so this is your x and y, and this is in your third dimension, which is the vertical dimension. So now what this is saying is, any point on this xy plane is giving you a particular value of x and a particular value of y. तो ये x एक random variable है, ये y एक random variable है, right? And every point over here gives you that x takes this value, x is equal to 1, y is equal to 2, x is equal to 5, y is equal to 7, है ना? ये सारा कुछ ये सारे points दे रहे हैं. Cool. What is z going to give? Z is again going to give कि अगर x 2 है और y 7 है, क्या probability है इस बात की? फिर से your total probability will be equal to 1, right? Your total probability will be equal to 1. फिर से वो 1 kg sand ही distribute करना है इस plane में. But अब वो जो sand है वो एक 2D में नहीं रहेगा, एक 3D में आ जाएगा. So imagine that let's say this is a handkerchief, right? So now imagine कि वो जो bell है जो हमको 2D में मिला था अब वो 3D में आ गया है. मतलब कि if this is how it is behaving in the three axes, then every point on the surface of this is giving you the probability कि particular value क्या है x की और y की. So you suppose this is a value, your x takes value this, and your y takes a value this. इसकी probability 3D मतलब इसकी probability क्या है वो हम 3D में plot करेंगे. वो value suppose इतनी है ना? और ये जब तुमने सारा कुछ प्लॉट कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है सपोज, which is giving a value to every possible combination of x and y values, which is essentially giving you the probability के x और y का किसी भी पॉइंट पे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्या होगा. दिस इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक. सो जब ये डिस्क्रीट है तो यू विल हैव सिंगल पॉइंट्स, एंड व्हेन इट इज कंटिन्यूअस तो तुम्हारे पास एक स्मूथ कर्व होगा. जैसे तुम एक्चुअली में यू कैन इमेजिन द बेल ऑफ अ टेम्पल, और यू कैन इमेजिन से द कैप, राइट? यू कैन इमेजिन द कैप ऑफ एनी बॉटल. तो ये एक 3D फिगर है और इसमें जो पूरी डेंसिटी है, अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास एरिया की जगह अर्लियर
your in 2D, the integration for a continuous thing was giving you an area. Now it will give you a volume. So ये 3D फिगर है, इसका कोई भी सेक्शन लोगे इसमें एक वॉल्यूम है, वो 3D में वॉल्यूम is the counterpart of area in 2D. Alright, so now when you integrate, you will integrate over both x and y, and you will get a volume which will again denote probability. इस volume का भी summation 1 ही होगा. This is your joint probability distribution. If it's discrete, if it's continuous, accordingly you can either sum it up or integrate it. Yeah. So this is what is written over here, that the joint, so if x and y are two discrete random variables and they're defined on the sample space of any experiment, x एक particular range of values ले सकता है, y एक particular range of values ले सकता है, then the joint probability distribution, joint probability mass function in case of a discrete one, is defined for each pair of numbers x and y, where the probability is that the x takes the value equal to whatever x is the number, small x, and y, random variable, takes the value equal to small y. Or of course this summation should equal to 1, है ना, हर नंबर का probability 0 या greater than 0 होना चाहिए, negative नहीं होना चाहिए, and the total probability should be equal to 1, the usual case. All right. Yeah, you can just skip it. Then the joint probability table में तुम discrete के लिए you can actually plot things on the table. If you have two random variables, तो तुम table में plot कर सकते हो. This is the value, the possible values that your x can take. This is the possible values that your y can take. X can take 100 and 250. Y can take 0 and 100 and 200. So this 0.20 is the probability that x is equal to 100 and y is equal to 0. Right? Uska probability है 0.2. The probability that x is equal to 100 and y is equal to 200. Right? Think about it. What is the probability? है ना? ये table से it's very easy, right? So you can easily figure it out. Okay. Then this kind of table also gives the mass probability mass function. If you know the joint, you can go from joint to individual. ठीक? तो अगर x is equal to 100 का probability क्या है? x is equal to 100 का probability, total probability कितना है? जब x 100 है तो y क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है with a probability of 0.2, या तो वो 100 हो सकता है with a probability of 0.1, या तो वो 200 हो सकता है with a probability of 0.2. Right? Since these are OR cases, this or this or this, we will add them up. Probability of x is equal to 100 का मिल जाएगा हमको summation जब हम रो को ऐड करेंगे. करेक्ट. सिमिलरली y x is equal to 250 का भी summation मिल जाएगा जब हम इस रो को ऐड करेंगे, और हमारे पास x की probability distribution आ जाएगी, the marginal probability distribution. Similarly y के लिए you will be adding up the columns. Cool. Okay. So this is your marginal. Then what else? If you have a continuous thing, I've already shown you कि continuous में कुछ 3D figure बनेगा और हम volume की बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसा है ना. So this is your, the shaded area is the 2D support of x and y. X and y can take values in this range. और ये जो volume दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, वो है इसका probability कि कोई भी say section of this rectangular area will have the probability which is equal to the volume of this section. कुछ ऐसा, ठीक है ना. So this is your joint probability distribution. What else? Again, marginal will be if you sum for x, you need to integrate over all the values of y, which makes sense कि मतलब x का एक वैल्यू के लिए इस केस में सपोज y के 3 पॉसिबल वैल्यूज थे, x के एक वैल्यू के लिए y के 3 पॉसिबल वैल्यूज थे, तो तीनों पॉसिबिलिटी में x का वैल्यू तो 100 ही है ना. तो देन यू सम ऑल दीज पॉसिबिलिटीज, राइट. सो यू, इफ यू वांट टू टेक आउट द मार्जिन ऑफ x, यू सम ओवर, यू इंटीग्रेट ओवर द अदर पार्टनर के जो प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सम कर देना है. ओके, कूल कूल कूल. या इंडिपेंडेंस डिस्कस कर लेते हैं. इंडिपेंडेंस इज
usually it can happen that independence कैसे define की थी हमने? Dependence, independence. We said that if the information about one random variable gives additional information, or additional information in the sense कि अगर conditional probability actual या prior probability से different है ना, तो तब things are dependent, तब the random variables are dependent. क्यों? क्योंकि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिलने से अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, तुम्हारा कंडीशनल चेंज हो जाता है, तो मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन. एंड इफ इट डज नॉट, देन यू आर इंडिपेंडेंट. तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है. सेम फंडा अप्लाइज ओवर हियर, राइट? सो इफ two random variables are there and they are independent, it would mean that for what is their joint probability. तो joint probability को independence के लिए what you will find is कि तुम उनकी individual probability x equal to x का अपना probability and y equal to y का अपना probability तुम सिर्फ multiply कर दो, है ना? Remember independence का probability में definition यही था ना, probability that a and b, a intersection b, if it is just equal to probability of a into probability of b without any sort of standardization by the probability of B. अगर ऐसा है तो events are independent. So it is an analogous definition where the joint probability is just the product of individual probabilities. That is independence, which essentially means के x के किसी value, if x takes a certain value, that in no way affects the value that y would take. फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट वाला कॉइन फर्स्ट टॉस में हेड्स आया है, दैट डजंट हैव एनी रिलेशन टू कि सेकंड टॉस में हेड आएगा या टेल आएगा. सेकंड टॉस अपना टॉस है, वो इंडिपेंडेंट है फर्स्ट टॉस से, है ना? दैट मीन्स ऑलराइट. More than 2 is just a generalization and more complication. We don't need that right now. And conditional distribution is where you fix a value of the other variable, right? जो हमारा वो टेबल था, probability table, joint probability table, उसमें suppose you want to find out that what is the probability of x given, what is the probability distribution of x given that y is equal to 0, you know? So then you have to just that column where you have to look, right? Okay. And then you of course normalize क्योंकि probability को sum तो it has to sum up to 1. All right. Then the last thing that we will do today is expected values, covariance and correlation. Expectation का definition same है. Expectation का definition always will be that you take the value and you do a weighted average, है ना? So हर value के साथ उसका weight attach होगा, उसको तुम sum करोगे. So अगर discrete है तो you will have the value, right? इसमें actually it's not the definition of expectation because they are not repeating it. I'm just repeating it. Suppose whatever value that your x and y takes, right? And the probability with which they take that value, right? So ये हो गया weight, probability is the weight, this is the value. You sum them up, you get your expectation. If you are working with joint, so the value that they take, right? And then what is the probability with which they take that value. This is saying that you can have a function of the values. So suppose you say that x and y का हम एक function define कर रहे हैं, x plus y, right? So then whenever x takes a value, suppose 5, y takes a value 7, your function takes a value 7 plus 5, 12. तो तब कैसे करोगे? 12 into the probability, the joint probability of x taking a value 5 and y taking a value 7. ये कर दोगे, and then you will do these different combinations of all the possibilities, sum them up, you will have your expectation. इसको करने का मतलब ये है कि यूजुअली हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जो ये दो वैल्यूज को एक में कंडेंस कर दे, है ना? क्योंकि दो वैल्यूज को कैसे ट्रीट करोगे इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. So we just condense them into one value. Suppose x plus y हो गया या x into y हो गया या x by y हो गया. They will all, the expected value of those functions will always have this formula. Similarly, this is your continuous counterpart. Now, let us get to the discussion of covariance, right? Covariance or correlation, important terms हैं, something that will be
something that we will keep on coming back to in econometrics. कोवेरियंस का मतलब बेसिकली है कि दोनों वेरिएबल्स अपने अपने मीन के अराउंड कैसे मूव करते हैं, और क्या जब वो मूव करते हैं वी आर एबल टू ऑब्जर्व सम पैटर्न, राइट? सो लुक एट दिस रैशनल फॉर द डेफिनेशन बहुत सिंपल है. डेफिनेशन ये है कि तुमने x में डेविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन multiplied by the deviation of y from its mean, right, times x और y का joint probability distribution, या the probability with which x takes a value small x, y takes a value small. इस डेफिनेशन का, ये डेफिनेशन तुमने बहुत बार किया होगा, न्यूमेरिकल्स किए होंगे. मेरा पॉइंट है इसका मतलब समझा. इसका मतलब ये है कि हमको अक्सर ये दिखाई देगा that x, of course, suppose कोई random variable x है, that will not keep on taking value equal to its mean, right? It will have a spread around the mean. Now, if the spread around the mean of x, जो random variable है, shows a very, pattern of behavior, the way y behaves around the mean. Now, suppose y जब भी मीन से ज्यादा है, x भी मीन से ज्यादा है अपने मीन से, y जब भी अपने मीन से कम है, x भी अपने मीन से कम है. तो ये एक पैटर्न है, ये मतलब एक पॉजिटिव पैटर्न है. इधर ज्यादा है तो इधर भी ज्यादा है, मूवमेंट अराउंड द मीन, है ना? इधर कम है तो इधर भी कम है. This is what we are trying to capture in covariance. So this is what it says there. The rationale is this: suppose x and y have a strong positive relation to one another, by which we mean that large values of x tend to occur with large values of y and small with small. है ना? मीन के एग्जैक्टली मीन तो होगा नहीं अक्सर, मतलब अक्सर वही ही होगा. So if you have large values of mean, that means the deviation around the mean is large and positive. And if this is if you observe this and then you see that अच्छा y का भी ऐसा ही पैटर्न है, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इसको कैप्चर करने का एक तरीका है कोवेरियंस. Alright, so this is the reason why it is calculated like this. Now, to one caveat about this, कोवेरियंस हमेशा सिर्फ लिनियर रिलेशनशिप मेजर करेगा. ठीक है, ये एक लिनियर फॉर्मूला है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, इसमें कोई क्यूब नहीं है, और इसमें और कोई भी फंक्शनल फॉर्म नहीं है. ये एक लिनियर फंक्शनल फॉर्म, which means that if you see observations like this, suppose ये x है, look at here, ये y है, these are the means, and whenever x takes large positive values, y also takes large positive values, है ना? y भी अपने मीन के ऊपर है, x भी अपने मीन के ऊपर है. x मीन के नीचे रहता है, y भी मीन के नीचे रहता है. एक पॉजिटिव कोरिलेशन है. जब x अपने मीन के जब y अपने मीन के नीचे रहता है, x उस टाइम पे अपने मीन के ऊपर रहता है ना? x का मीन ये है, this area is where x is higher than its mean, this area is where y is lower than its mean, and vice versa. Negative correlation. This is where there is no particular relationship, है ना? This is no correlation. But if you observe something like this, x y, right? कुछ अगर ऐसा ऑब्जर्व करते हो, right? Something like this, रिलेशनशिप है, लेकिन कोवेरियंस इसका भी जीरो ही आएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला. सो कोवेरियंस अगर जीरो है, कोवेरियंस अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप है ना? कोवेरियंस अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है, डेफिनेटली रिलेशनशिप है, मतलब कुछ ना कुछ डिपेंडेंस है. लेकिन अगर कोवेरियंस जीरो है, तो वो सारे के सारे डिपेंडेंस को रूल आउट नहीं करते हैं, वो सिर्फ लिनियर डिपेंडेंस को रूल आउट करता है. इस टाइप का रिलेशनशिप होगा, या इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा, कुछ साइन टाइप का, साइन कॉस कर्व टाइप का होगा, वो हमारा कोवेरियंस का फॉर्मूला नहीं पकड़ पाएगा. ठीक है ना? तो अगर तो covariance is positive or negative, something other than zero, then we definitely have dependence upon among the variables, linear dependence. But अगर covariance zero है, then linear dependence नहीं है, but dependence को rule out नहीं कर सकते. So that means that if the variables are independent, that means कि हमने सारे टाइप के relationships rule out कर दिए हैं. ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, linear भी. Then
Independence implies that they will have zero covariance. इंडिपेंडेंस का मतलब डेफिनेटली कोवेरियंस जीरो होगा, लेकिन ये उल्टा नहीं चलेगा. जीरो कोवेरियंस का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है. यू कैन स्टिल हैव रिलेशनशिप अमंग देम, बट इट विल जस्ट नॉट बी कैप्चर्ड बाय योर फॉर्मूला. ऑलराइट, सो कोवेरियंस के बारे में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इंडिपेंडेंस implies covariance, sorry, independence implies no covariance, right? But no, or rather zero covariance does not imply that the variables are independent. Independence एक much stronger condition है. Covariance सिर्फ एक उस रिलेशनशिप का, पॉसिबल रिलेशनशिप का एक पर्टिकुलर चीज चेक करता है कि लिनियर रिलेशनशिप है कि नहीं. Right. Okay, this is another formula that you can use. And finally, correlation. Correlation जो है basically एक standardized version है, एक unit less version है covariance का. Covariance unit sensitive है और बहुत बड़े numbers ले लेती है, because it basically has your squaring, right? You're squaring deviations from the mean. एक बारी x का deviation multiplied by the y का deviation. So it comes, उसका unit जो है वो x और y का square हो जाता है. तो उसको हटाने के लिए हम दोनों का रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डिविएशन से जब डिवाइड कर देते हैं, वी गेट अ यूनिट लेस quantity, which is the correlation coefficient. Correlation coefficient will always lie between -1 and 1. एंड जो भी कोवेरियंस का साइन होगा वो भी कोरिलेशन का भी साइन. ऑलराइट, okay, so this is it for today. This is where we will stop, and with this we finish your statistics, the introductory statistics ka revision, which was in your first semester. Now in the next one we will actually try to do the entire second semester, where we will do your estimation and hypothesis testing. So basically the inference part, right? Start करेंगे central limit theorem से. Once you understand that, then things will follow much more easily. All right, so let's stop here. I will see you in the next revision class, and happy studying. Bye.